अभी हुई है झमाझम वाली बारिश। क्यों आया पीछे पीछे? और ये पोटैटो बाइट्स थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। साथ ही मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो इसके लिए लंबा लंबा अनियन इस तरह से पतला पतला काट लिया। एक आलू, एक प्याज है ये गया बाउल में। आलू में नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, बस इसमें डाल दूँगी बेसन, इसको करना मिक्स।
अगर आपको इसको थोड़ा सा क्रंची बनाना है तो उसमें 1 या 2 चम्मच आप चावल का आटा मिला दीजिए, तो मस्त क्रिस्पी वाले बनेंगे। अनियन से उनको इस तरह से खोल लेना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला करके बैटर बना लेना है अच्छे से। और इधर जो मैंने राइस भिगो दिया खीर के लिए, दूध को रख दिया बॉईल होने के लिए, तो तक पकौड़े बना देते हैं। और खीर जो आराम से पकता रहेगा 30-40 मिनट तक। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें ऐड कर दूँगी चावल। क्या कर रहे हो? खुद की वीडियो बना के खुद ही देख रहे हैं। वाह वाह वाह। मैंने चीनी और इलायची का पाउडर डाल दिया है। खीर एकदम रेडी है। चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है। अभी गैस कर दूंगी ऑफ। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं कर रही मैं। गरम होने के लिए रख दिया है। अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म पकौड़े। If I feel it, then I don't stand a chance. Stand a chance. Don't stand a chance. I feel the night behind me. I can't be fooled, but I put up a fight. 'Cause I'm an optimist. Just keep me coming back. When you call me, it's a kind of call. I hear it running through my blood. If you feel it, then I don't stand a chance. का छोटा सा एक व्लॉग, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।